अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी सिलेट सिटी टूर बांग्लादेश। और जैसन बिल्लाम ट्रेवल्स की ये वीडियो है। अच्छा, इनकी एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं राजशाही के ऊपर, और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी रिसर्च हम भी करेंगे सिलेट के बारे में, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वीडियो को देखने का मकसद ये है कि हम सिलेट के बारे में जान सकें, जहाँ से हमें बेशुमार दोस्त बहुत प्यार भरे मैसेजेस ऑलमोस्ट डेली हमारी हर वीडियो के ऊपर करते हैं, और हमें ये जानने का मौका मिलता है कि सिलेट से कितने दोस्त, कितने भाई हमें वहाँ से हमें देख रहे हैं। सो एक काम करते हैं, चलते हैं पहले इस वीडियो को देखते हैं, बिकॉज इस सिटी को देखने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, और फिर जो हमारी अपनी भी एक छोटी सी रिसर्च होगी वो बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलते हैं, चल के देख लेते हैं एक बार इस वीडियो। चलिए, चैनल पर नए और हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Hello and welcome back to Bangladesh. I am now here in Sylhet in the northeast of the country. I am actually staying here on this road just a bit further down there. We're a little bit away from the city centre, so I'm going to probably jump on a cycle rickshaw after a short walk. To reach Sylhet here, I took a bus with a company called Green Line. They are an excellent company doing some work on the road here. I used Green Line last time I was in Bangladesh. They did not disappoint me. They drive a bit safer. It's a little bit pricier than other bus companies, but they are one of the best. You get plenty of legroom and space. Some fish here, where locals are picking up from the side of the street. Yeah, beautiful. Looks good. Yeah, fresh. Yeah. To go from Dakar to Sylhet, I paid 1,500 taka, which I think works out to about £10. Hello. Interesting to soak up the vibe of the town here, a little outside of the centre. Traffic getting out of Dakar was quite bad, and in the end, the journey, I think it's supposed to take just over 6 hours. It took 9.5 to go from Dakar to Sylhet, which wasn't the bus company's fault. There was a very congested part of the road we were stuck on for a good few hours. Just immediately outside of Dakar, I took a screenshot on my phone, and you can see by that point we've been on the road for 3.5 hours and we barely sort of left on the way. Hello, Panshi, you know, restaurant, Panshi, yeah, okay. Now, even though Sylhet is the capital of this region, it has quite a laid-back feeling to it. It's more of a small town feel. It doesn't feel as immersive as Dakar does, at least from my memory, and I'm sure we're going to see that even 6 years on today. Rickshaw journey arrived, and this friendly man is already showing me the entrance to Panshi, the ultimate local restaurant here, famous
and probably heaving at lunchtime here, although I'm a little bit late because it's around 2 p.m. This is the inside here. So I'm sat down here in Panshi restaurant, and you share tables. Just pick your spot and you'll be opposite a local sylheti, and I've been told to try the quail biryani by a friend. And so here is the rice and then the dip or the sauce for the quail biryani. And then this is a chicken leg roast on the side for a little bit of protein. So let's get stuck in. They have many dishes here at this restaurant. Curries with fish, chicken, meat, different soups as well. And there's a whole plethora of things on the menu, and many of the things they do very well. This sauce on the side is to die for. It is very rich and meaty with a great flavor. This very kind gentleman opposite me has just bought me a Coke. Thank you, Donabad. Welcome to Bangladesh. Thank you, thank you, thank you. So just finished my lunch there in the famous Panshi restaurant, and so the quail biryani was really nice. I don't think I've ever eaten a quail before, which is the small bird. If you Google it, it's a very pretty bird. It makes me a little bit sad that I ate one, but at the same time, it's a local delicacy here. So now we're on the streets of downtown Sylhet. I seem to be getting a bit more attention here than in Dakar. Probably, as you know, few people really visit Bangladesh, and well, at least in Dakar they are somewhat used to a lot of Westerners, and I guess they are here too in Sylhet, but just maybe a little bit less. Almost everyone in the restaurant wanting to stop and talk to me, which is nice. It's really nice. Shows how friendly people are in every corner of the country. Lunchtime atmosphere of the city centre here. This is one of the main junctions in the center of the city. But we're going to head down this way towards a famous shrine, Sufi shrine, belonging to a man who made his way here from Arabia. I believe he was from Mecca and helped bring Islam to Bengal and Sylhet. His name was Shah Jalal, and this is one of the largest pilgrimage sites for Muslims in Bangladesh. Hello. Always vendors on the street making fuchka or different drinks sometimes. I just need to keep heading straight. An interesting fact about Sylhet, which you may not know, is that it has quite a connection with especially London. There are many Sylhetis who have settled in the UK and then come back to Sylhet, invested in the local economy, and ultimately bring cash from outside that they earned in London or in the UK back to their hometown. And there's a really high percentage of good level English speakers in Sylhet because of the connection with London. I'm sure I'm going to have a few comments on this video saying I'm a Sylheti who lives in the UK or who stayed in the UK for a number of years. And if that's you, let me know below. Approaching the shrine now, which is at the end of this street.
and I'm not sure how they are with filming, so maybe I have to leave my camera or my phone behind before we go in the shrine. I am not sure. How are you? Good, thank you. How are you? Your country? England. England. Yes, England. Yeah, good. They seem to be okay with non-Muslims entering, but I will be careful with the filming here. I know there is a mosque on site along with the shrine. Hello. Beautiful building. यहाँ पर भी कब्रें हैं। What an amazing experience in the shrine there. I saw the shrine of Shah Jalal in there, the 14th century Sufi saint who helped bring Islam to the region. I turned off my camera because I wasn't sure on the filming of the actual sensitive part, and I decided to just play it safe. I think if you want to visit for yourself, you will see the shrine with your own eyes. I took one shot in there of the building just opposite the shrine, just to give you an idea of what the interior looked like, although I didn't shoot the shrine itself. And so now I am back on the street. While I was in there, I got quite overwhelmed with attention. Many people asking me where I was from, and a little crowd forming of very friendly, smiling locals interested about my religion and my visiting purposes. Now back in another rickshaw, and it is rush hour now. I am heading to a well-known meeting spot in the city by the river, which I have a lot of memories from. I spent a lot of time there 6 years ago, and I'm looking forward to taking in the sunset hour once we arrive. I'll talk a little bit more about this special place in Sylhet. My sister, my niece lives in UK. Okay, which part of the UK? East London. Okay, East London. nice. It's quite funny how you can have conversations while in the traffic jam. A few people have been talking to me on this side and this side as we edge our way forward. Too much. I want to pay double masters, education double masters. Sunday market. So I'm now here by Keene Bridge, which is the main crossing across the river to enter the city. Many people go over it every morning and evening during the rush hour to go back to the South Bank, where they may live and work, on the city side. Here on the North Bank, I'm gonna... Are you Jason Billam? Yeah, I am, yeah. Nice to meet you. Nice man there who remembers my videos from 6 years ago. So let's take a walk over the bridge. I probably should have walked here, it would have been quicker.
I asked the rickshaw guy to take me to Keene Bridge, and he said, yes, yes. And I said, Keene Bridge? He said, yes. Well, great. So then we started going during the rush hour. But after a while, I realized he's not going in the right direction. And then the guy I was talking to in the traffic jam on the bicycle with the dark shirt, the black shirt. Okay. So I think he wanted to show me the building over there. Here we are, the historic bridge. Around the sunset time. And well, actually, the guy with the black shirt, I confirmed with him this isn't the way to Keene Bridge, and he said, no, no, it's not. Let me talk to your driver. And he told the guy on the side of the street, you're going the wrong way, take him to this bridge. He didn't seem to understand Keene Bridge, so he showed him a picture on Google, and then the guy understood where to take me. It's quite a beautiful view of the river and the settlements on the banks and the greenery. Something unique with Sylhet is the crossing every day that you see, the masses of people going on foot to work or going home. When I was in Sylhet last time, I stayed on the south bank a bit further with a lovely guy called Uttam from a Hindu family, and his mother, who were just so friendly and incredibly hospitable to me. Memories I'll never forget. And I lost Uttam's contact. I couldn't find him before this trip. And so I had to ask a friend of a friend to track him down. I didn't have him on social media or any app like couch surfing. I didn't even have his phone number. I met him in the first place through someone on Couchsurfing who said, you can stay with my friend because I can't host you. Anyway, I found out where Uttam is. Unfortunately, he's in India, so he's no longer here in Sylhet. It would have been so nice to meet him again, and maybe I will try to track him down the next time I'm in India. I wonder how he's doing 6 years later. We went to Lalakal together, and we had very late dinners at his house. I remember eating on one night at 1 a.m. in the morning. He gave me his bed. He slept, I think, somewhere with his mother or one of his family members. They were just incredibly friendly. Here we are on the banks of the Surma River, the best view of Keene Bridge. Modern is like Times Square. Times Square. The clock tower there, all built during the British era, although badly bombed during the Liberation War with Pakistan. And walking along here during sunset is a great way to soak in local life of people chilling out after work, and also grab a chai, which I remember doing with a few friends back in 2018 here. It's kind of a good meeting spot in that sense. I got talking to a nice guy here who's just invited me for tea, so I'm gonna sit down with him by the bridge, which is something, like I said, you should do. You can have it like you are roaming around here. You want tea? Okay. You can have it from here, but not the best. Okay. Actually, it's good. Okay. I was just saying that the tea here is very sweet. Compared to the UK, we usually have just a little sugar or almost no sugar. We have. But it's very nice. I like it. It's like a dessert for me.
We have a lot of Warm sugar. dessert. Warm dessert. Yeah, warm dessert. हमारे तो यहाँ पे खुद चाय हर तरह की चीनी के साथ। Okay, so after having my tea by the river there with those lovely people that I met, I am now just going to finish off with some dinner here at the next most famous restaurant called Patch Bai. Hello. Just one person. Hello, hello, assalamu alaikum. It's called dal borta, and it's shutki borta, and this one sim borta, and this one is called shorisha. Okay, so they're all included when you order something with rice. Yes, you including rice and then you try. Yeah, okay, cool. I was a bit unsure what to order here, and then that friendly guy told me you should try the shakora, I think it's pronounced, which is the beef. He said it's a sylheti dish. And then he was explaining that you get borta with your meal. And there are so many different things here to try, along with the rice. This is to wash my hand. I suppose I better dig in. Trying the different waters here. Really nice. This one has a strong onion and chili flavor. Some kind of green leaves. And this one, which has arrived, shadkora. Beef, yes. Trying the shadkora. Curry is so rich. Really, really good. Nice and meaty. So just finished the meal and another char to end things. And this restaurant is kind of intense in the way that they gave me so many different dishes to try. Many of them were really spicy, and in Bangladesh it's kind of good etiquette to finish your food, not to leave a grain of rice. You'll see lots of locals doing that. And my mouth was on fire, and there were so many people staring at me eating. Just like 3-4 guys around ready to take any dish I'd finished, watching me eat, and then people on the other tables watching me eat while my mouth was burning and feeling the pressure to finish all the dishes. I'm going to end things here from Sylhet. I hope you enjoyed the video. Country. Yeah, very beautiful. Yeah. You live in England. From the UK, yeah. You live in Cambridge, UK. Italy. England. England. Yeah, England. Yeah. Okay, thank you. And I'd say hundreds of people have come up to me today to ask where I'm from, how am I, all these things, and even eating just now, a guy came and sat opposite with about 3 or 4 of his friends, and they were all asking me questions while I was eating. So anyway, I'm going to end things here. So thank you for watching this video. I hope it gave you a good taste of Sylhet, and I will see you on the next one. Cheers. नाइस वीडियो यार, बहुत मजा आया हमें। और इससे पहले हमने एक आधा व्लॉग देख रखा है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी डिटेल नहीं थी, क्योंकि सिटी टूर जैसे आप मतलब आप वॉक अराउंड करते हो ना, उसका मजा और एंड नॉट ओनली वॉक, बल्कि आप वहाँ पे मतलब लोकल कुजीन्स ट्राई करें, आप वहाँ के लोगों से बात करें, तो आपको एक सिटी की वाइब और तरह की आती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वॉकिंग। और आप देखिए खास तौर पे सिमिलैरिटी आपको कितनी लाहौर के साथ लगी सिलेट की। मुझे लगी बहुत जगहों पे बहुत जगह बहुत मार्केट्स मिलती हैं डाउनटाउन, और खास तौर पे वो जो वो एक मेन रोड से वो गुजर रहे थे, मोबाइल मार्केट वाली जो मोबाइल और लैपटॉप्स की मुझे मार्केट की तरह से वो लगा। मुझे वो रिजेंबल किया लाहौर की हॉल रोड से। अच्छा, आप ऐसे देखें कि जो आप बात कहते थे रोड साइड मार्केट्स की, बंदे को क्या जरूरत है किसी सुपर स्टोर जाने की, हर चीज वहाँ पे मिल रही है। और यकीन करें कि इतनी ताज़ा मछली देख के ना मेरा दिल बाग हो गया, क्योंकि यकीन जाने हमें यहाँ पे अच्छी मछली ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। जगहों के स्पॉट्स रखे हुए हैं हमने कि भाई वहीं से हमारी तसल्ली होती है कि वहाँ पे ऐसी हमें तो यहाँ से ओल्ड सिटी पूरा 1 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा ही है। एंड मी बीइंग द परचेजर ऑफ ऑल दिस स्टफ, मैं आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि यहाँ पे ताज़ा मछली नहीं मिलती, बिकॉज मछली जो है वो यूजुअली जो समुद्री मछली है वो तो खैर ज़ाहिर कराची से आती है, और जो दरियाई मछली है वो भी हमें तकरीबन कोई 1 से 1.5 दिन के बाद मिलती है। फार्म्स हैं वहाँ से आती है मछली, तो हम वो वाला टेस्ट कभी एंजॉय नहीं कर पाते जो एग्जैक्टली हमें ताज़ा मछली यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है। लेकिन टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश,
ऑल द टाइम, एवरी टाइम आपको जब मिलेगी आपको ताज़ा मछली ही मिलेगी। आप देखें वो हजरत शाहजलाल का जो श्राइन थी वहाँ पे भी वो इवन फिश वहाँ पे अच्छा, आपको मेरे नजर आ लिए वो रही एक है। बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसको अंदर से देखना, गो के खैर बहुत अच्छा किया जैसन ने कि श्राइन को अंदर से उन्होंने शूट नहीं किया। एक ज़ाहिर है कि एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, उसके अंदर एक इज़्ज़त और एक उस एहतराम की रिस्पेक्ट को जगह है, मेंटेन करना भी रिस्पेक्ट को चाहिए। मेंटेन करना चाहिए। और फिर मुझे वो जो श्राइन के बाहर की जगह है वो उसकी वाइब मुझे जो है वो हज़रत दाता अली हजवेरी की जो श्राइन है लाहौर में, मुझे उससे भी एक वो आया, क्योंकि यहाँ जो श्राइन है वो मस्जिद के अंदर बनी हुई है। मस्जिद के अंदर बनी। सो वहाँ पे मस्जिद साथ है, लेकिन नहीं, अगर आप देखें ना कॉम्प्लेक्स ये भी बहुत बड़ा है और वो भी बहुत बड़ा है। हाँ। और वहाँ पर भी इसी तरह है कि क्योंकि रेलवे स्टेशन भी बहुत करीब है वहाँ पे, हाँ जी। तो हम ये देखते हैं कि बेशुमार जो होटल्स और आपके लिए रहने के लिए जगह आपको नजर आती हैं। वो लोग बाबा देखे ना डिफरेंट सिटीज से आते हैं, बाज दफा बाहर से आते हैं लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर जो कीन ब्रिज उन्होंने बताया था जी, कीन ब्रिज। अच्छा, वो तो खैर देखते साथ ही उसका जो आर्किटेक्चर है उसने एक फील दे दी कि वो ब्रिटिश एरा का ब्रिटिश है। एरा। अच्छा, थोड़ी सी अगर जो है वो टेक्निकलिटीज़ की तरफ आते हैं, अपनी उस रिसर्च की तरफ जिसके बारे में हमने वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात की थी। हमारी रिसर्च हमें ये बताती है कि तकरीबन कोई 1.5 मिलियन के करीब इसकी आबादी है सिलेट की, और जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश उसके अंदर ये है। और अगर ये कहा जाए कि ये बांग्लादेश के 3 बड़े शहरों में से एक है, आफ्टर ढाका एंड चिटागोंग जो है वो सिलहट का नंबर आता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक ये कि ये शहर जो है मतलब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, और मतलब मुग़ल एरा के अंदर उससे पहले भी ये आबाद था। मुग़ल एरा के अंदर आया, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने यहाँ पे आके जो है वो काफ़ी इसको आबाद किया। एंड उससे पहले फिर ये जो वहाँ के बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने भी इसको आबाद किया। सो ये एक अपनी एक रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया तो पता ये चला कि अपनी टी प्लांटेशंस के लिए ये शहर और ये डिवीजन पूरे का पूरा सिलेट डिवीजन जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। और टी प्लांटेशन की वजह से ही यहाँ से टी एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बेशुमार जो कमर्शियल और इकोनॉमिक जो इदारे हैं वो वहाँ पे इंटरनेशनल भी वहाँ पे मौजूद है। मतलब आपने वहाँ पे सैमसंग देखा, आपने वहाँ पे शार्ट देखा जापानीज़। तो फॉर दैट रीज़न इसका जो क्या कहना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम है इसकी, वो कंबाइंड इस शहर का जो जीडीपी है दैट इज़ 40 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि ये बांग्लादेश के जीडीपी टोटल जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और उसके बाद हमने रोड्स तो हमने देखी, लेकिन हमें थोड़ा सा एक वाइब आई, एक अंदाज़ा हुआ, वो ये हुआ कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था ऑल अलॉन्ग द सिटी, मेन रोड्स वगैरह बनाई जा रही थी। सो जाहिर है कि रोड्स जो हैं वो वेयर एंड टेयर का, अपने नई लुक में आएगा तो और खूबसूरत लगेगा। वो वेयर एंड टेयर का शिकार होती हैं। और ये रोड्स की अपग्रेडेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है कि जिसको हर जगह किया जाता है, हर जगह पे ये होता है। और इसके अलावा जो है हमने ये चीज़ भी देखी कि वहाँ पे आपको एक हसल बसल, लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा चिटागोंग या ढाका, स्पेसिफिकली ढाका की तरह मुझे वो क्राउडेड और वो उस तरह से कंजस्टेड नहीं था। वो chaotic नहीं लगा आपने मुझे। बोला, मैं समझ रही थी कि वो नाश्ता करने जा रहे हैं, नहीं, वो दोपहर का टाइम खाना जब आया तो वो पता 2 चला PM कि भी दोपहर का खाना खा रहे हैं। सो वो रश और chaotic फीलिंग हमें बिल्कुल नहीं आई। ऐसी लग रहा था सुबह सुबह की मार्केट्स जैसे बिल्कुल लगती वैसे है, लगा वैसे था। ही आ उसकी रहा एक था। बहुत बड़ी वजह ये भी है ना बाबाजन कि ढाका में जितनी पॉपुलेशन है ये इसके अंदर तो उतना हाफ भी नहीं है उसका, नहीं, बहुत कम है। ढाका में बहुत ज्यादा, ढाका में बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर एक और ढाका चीज बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा आप नोटिस करें कि अंदाजा हुआ कि जिस जगह पे ये थे वहाँ पे जब ये मतलब चल फिर रहे हैं कुछ है, तो हमने बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखे वहाँ पे ना। अच्छा, मैं उस तरफ आने लगा था। ढाका जो है वो ढाका कह रहा हूँ, सॉरी, सिलेट। ढाका की बात हो रही थी, सो मेरे मुंह से ढाका निकल गया। अपने बेशुमार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से ये शहर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में की जाती है। अच्छा, एक और चीज़, अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बांग्लादेश आर्मी जो है वो भी, उसकी बड़ी प्रोमिनेंट प्रेजेंस है यहाँ पे। और वहाँ पे एक मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे सिलेट के अंदर, और आपको एक जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट प्रेजेंस आर्मी की वहाँ पे है, उसकी एक लोकेशन की वजह से वहाँ पे। और अगर इसके अलावा हम बात करें वहाँ के खाने पीने की, तो हमने वो भी देखा। हमने ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के अंदर उन्होंने खाली बसेस बताई, लेकिन इसके अलावा बाय रेलवे ऑफ कोर्स और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ये बांग्लादेश और थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें ये पता चला कि ये शहर
बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। सो एनीवेज, अगर वीडियो को रैप अप किया जाए, रिएक्शन को रैप अप किया जाए, तो एन एक्सीलेंट वीडियो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हमने देखी ली, हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब सो मेनी पीपल कमिंग टू हिम, आस्किंग हिम हाउ ही वाज, और उसको कभी चाय ऑफर की जा रही है, कभी उसको खाने के साथ मतलब लास्ट में जहाँ पे डिनर हुआ है ना, मैं यकीन करें मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि जहाँ पे लास्ट में डिनर कर रहे थे, बस स्टाफ का बस नहीं चला कि भाई अपने हाथ से नवाला खिला दे, इतनी मोहब्बत से उन्होंने किया। ठीक है उनकी ड्यूटी है, लेकिन हर बंदे की ड्यूटी नहीं है कि भाई उसकी टेबल पे खड़े रह के उसको गाइड भी करे, क्योंकि बाकी भी तो टेबल्स थी ना। हाँ। कितने टेबल्स पे थे, और सिर्फ एक फॉरेनर होने की वजह से, क्योंकि वो खास तौर पे जैसे ने ये बात की कि एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अच्छी खासी सिलेट के अंदर है, और फॉरेनर्स का बहुत आना जाना है सिलेट के अंदर। सो फॉरेनर्स बाय एनी मींस उनके लिए कोई एक नॉर्मल चीज हो गई, एक नॉर्मल चीज है गेस्ट को देखने के लिए, गेस्ट की हेल्प करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी जो है वो शो करने के लिए, ये सब कुछ था। एन एक्सीलेंट वीडियो जी। आप बताइएगा कि जो ये हमारी छोटी सी रिसर्च थी ये कहाँ तक ठीक है, और अगर कुछ आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, हमारे नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें जान के बहुत खुशी होगी। फिल वक्त इस वीडियो के बारे में बताइए, हमारे रिएक्शन के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।